नहीं करवा दोगे? कहाँ करवाने कुछ लोग सोलोज भी कर लीजिए। हाँ, सोलो भाई साहब थोड़ा सा साइड हो जाओ। कहाँ करवाने कुछ लोग सोलोज भी कर लीजिए। हाँ, सोलो या दिस साइड या चलो हो गया है। चलो यस दिस साइड पूछ रहे हो ना? या सेंटर क्या नाम का फायदा ये सेंटर आपको देखो। दिस साइड यस सेंटर यस यस से करो यार। यस यस सेंटर दिस साइड सेंटर जी हमने फिल्म बनाई है। फिल्म का नाम है चित्रकूट। पिक्चर का नाम है चित्रकूट। पिक्चर रिलेशनशिप्स के बारे में है। इट्स अबाउट द आइडिया ऑफ लव। हम लोग सब ने मिलकर इसमें बहुत मेहनत करी है। अकबर भाई जिन्होंने पहले ख्वाहिश प्रोड्यूस करी थी, वो प्रोड्यूसर हैं मेरे साथ। और इत्रा, विभोर, नैना, श्रुति और किरण जो आज हमारे साथ नहीं है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द मेन कास्ट। एंड पिक्चर है 5 कैरेक्टर्स के बारे में। देयर सर्च फॉर लव, देयर सर्च फॉर कंपेनियनशिप and how love changes them. Essentially, the transforming power of love is what the film is about. And और क्या जानना चाहेंगे आप बताइए? हाँ, तो मेरी पैदाइश झांसी की है और वो एक आप कह सकते हैं कि अयोध्या का लैंड है वो पूरा। तो मैं बचपन से रामचरितमानस हमने हमारी फैमिली में पढ़ी जाती है। और एक बहुत फेमस एक विजुअल है जो आप लोग सब जानते होंगे कि राम सीता जी के बाल से हार रहे हैं। सो ये कहा जाता है हमारे इलाके में कि उस समय में उनका प्यार एकदम परफेक्ट था। तो ना उसके पहले ना उसके बाद। उसके पहले वो भाई थे, राजा थे, बेटा थे, और चित्रकूट के बाद उनका सीता जी का अपहरण हो गया। सो वो एक समा था उनके लाइफ में, व्हेन दे वर वेरी मच इन लव। इट वाज अ परफेक्ट लव। तो मैंने उसी का एक सिंबॉलिज्म पकड़ के एक मॉडर्न फिल्म बनाई कि प्यार जो है कभी रुकता नहीं। उसका सुनहरा पल एक लिमिट का ही होता है, उसको जितना भी कोशिश करो वो हाथ में नहीं आता। सो दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड चित्रकूट एज अ सिंबॉलिक मेटाफोर। सॉरी, लव स्टोरी है पूरा, रिलेशनशिप ड्रामा है। हिमांशु जी, आपसे जानना चाहूँगी 2000 में आई फिल्म तुम बिन में आपने एज एक्टर काम किया और अब जो है आप एक एक्टर से फिल्म मेकर बन गए हैं, तो आपकी जर्नी कैसी रही एक्टर से लेकर फिल्म मेकर तक? बहुत एक्साइटिंग जर्नी है मैं कहूँगा। आप एक बार एक्टर बन जाते हैं तो आप स्टोरी टेलर तो बन ही जाते हैं। तो साथ साथ एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है, एवोल्यूशन होता है हर आर्टिस्ट का कि वो एक्टिंग करे, राइटिंग करे, फिल्म मेकर बने या और कुछ करे। जैसे और इतना डांस करती हैं,
यू नो ये सब कुछ ना कुछ यू कीप इवॉल्विंग एज एन आर्टिस्ट. सो वो एक एवोल्यूशन था, नेचुरल था. एक समय के बाद मैं एक्टिंग से बोर हो गया था और बॉलीवुड की फिल्में मुझे बहुत बोर करती थी. मतलब इंटरनेशनल सिनेमा देख देख के मेरे को समझ में आ गया था कि बहुत कुछ कर सकते हैं इस फील्ड में. देयर आर लॉट ऑफ न्यू वेज ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट कैन बी डन. तो बस उसी से इंस्पायर होके फिर मैंने भी मतलब सोचा कि मैं, और कुछ ऐसा था कि जो कहानियाँ मैं देखता था अपने आसपास अपनी लाइफ में, वो मुझको पर्दे पर नहीं दिख रही थी. तो बस उसी मकसद से मैंने शुरू किया कि जो कहानियाँ मैं बोलना चाहता हूँ वो मैं बोलना चाहूँगा, और उसी मकसद से शुरू किया. कहीं से इंस्पायर है ये मूवी या कहीं इंस्पायर करेगी किसी फिल्म को या किसी? इंस्पायर्ड वैसे बहुत सारे पर्सनल किस्से हैं इस मूवी में. तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. रिलेशनशिप के ऊपर फिल्म है, और बहुत समय तक मैं चाहता था मैं कुछ ऐसी फिल्म बनाऊं, बट द थिंग इज़ इट इज़ अ वेरी ओल्ड जॉनर, रिलेशनशिप्स एंड लव. तो जब तक अनलेस यू डोंट हैव समथिंग न्यू टू से ऑन दैट, देन देयर इज नो पॉइंट, you know, because people have done so much work in this genre about male-female relationships. टीम सिलेक्शन को लेकर क्योंकि सभी अलग-अलग चेहरे हैं, किरदार किस तरह का कैसे सिलेक्ट किया, नहीं क्या खूबी थी इन सब बेहतरीन एक्टर्स हैं, सब बेहतरीन लुकर्स हैं, और इन सबको मैंने पहले मीटिंग में ही कास्ट किया. वन मोमेंट आई मेट देम आई न्यू आई एम गोना कास्ट देम. श्रुति, आपसे मेरा सवाल, मैम एक सेकंड. श्रुति जी, आप बताइए अपने किरदार के बारे में बताइए थोड़ा सा, आपका क्या किरदार होने वाला है? मैं इस फिल्म में किम का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. ये एक बेकर है और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक है किम का. सो बेसिकली शी इज क्वाइट अ फ्लर्ट आल्सो. सो दैट्स one trait of hers, and she lives her life through these couples जिनके लिए वो केक बनाती है. So how she discovers love through the other couples, that's a very interesting take of Kim. And Himanshu's really presented me so beautifully. I'm so happy and I'm glad somebody thought of me in that way as well. और even like he said कि पहली मीटिंग में हम मतलब I think I was traveling around when Himanshu had approached me, और मैं कहीं मैं बिल्कुल I was not interested in working around that time, and कुछ थोड़ी बहुत इन सबको मैंने एक पेज का एक सिनॉप्सिस भेजा था about the characters, which is what I think. But I remember जब मुझे स्क्रिप्ट मिली थी तो I think I just sat down and by my window, and I got up once I finished reading the script because it hooked me to that level, and I was totally consumed by it, and immediately I called him up and I said I'm on. So I'm really looking forward to your reactions as well. Himanshu, Majidi saw your film and he appreciated it. So what is your reaction and how did the film reach you? Arey, it was a pure blessing. It was great. So Akbar Saab is a very respected member of the Iranian community in India. He's the head of their community also. So he had some way conveyed to Mr. Majid that we have made a film, which is a very interesting film. Okay. And I think his manager in India saw some footage and said this is a very artistic film, and we should try and show it to Mr. Majidi when he comes to India. It has that touch of Mr. Majidi. It has that sensitivity. So it was a great compliment from the manager itself to begin with. And then Mr. Majidi was in India. He was the chairman of a jury in Kerala. And one day before he was going back to Iran, he agreed to meet me. And he had said very honestly that I want to meet the filmmaker, hear from him what his story is, what his film is about, and if I find it interesting, then I will see the film. Otherwise, please excuse me. So I said no problem. I will come and meet. I'll be more than happy to spend even a few minutes with you. I flew to Trivandrum that very afternoon. I met him for coffee, and he's a real. I mean, he's a miracle, really. The kind of person he is, for the stature of filmmaker he is, for the childlike curiosity he has about life, and the way he understood things so quickly, and that was the most fascinating thing for me. He saw the film, and the questions he had about the film
and it is not his language also. You know, he had two translators translating the film throughout the film, but he understood it so minutely, and I don't think there's anybody else who's analyzed the film better than he has. You know, and it was a memorable day for me, because I remember he came out of the hall and I was standing aside and I gave him space. He went outside under a tree, was smoking a cigarette, and he told his assistant that tell Mr. Malik that I will meet him for dinner and discuss the film, because I really like the film. I want to spend time with him. And at that point I said, so the assistant came to me and he said, he says, meet you for dinner. I said, but I'm taking evening flight out. So Mr. Majidi came to me directly. He said, you can't leave without meeting me. We have to talk about the film. Come in the car, come sit with me right now. I want to talk to you about the film. I want to know how you wrote it. I want to know how you built it. So I think it was a great gift. Hi Himanshu, this is Pari. चित्रकूट में कुछ शूटिंग होने क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हाय सर, दिस इज परी फ्रॉम मैग्नेटिक मीडिया. मेरा सवाल आपसे है कि आपने जब आप तुम बिन में आए थे और तुम बिन से अब तक 2022 में काफी चेंजेस हो गए हैं बॉलीवुड में. जिस तरीके से आपने कहा कि आप बोर भी हो चुके थे बॉलीवुड से, लेकिन आप अपनी मूवी जब आप ऑलरेडी सालों में बॉलीवुड में, वो आपको अच्छा है या बुरा है, किस तरीके से आप उस चेंज को देखते हैं? सच बोलूं तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, और मैं चाहता हूं कि चेंज हो. मतलब इन अ वे की स्टोरी टेलिंग, performances, the way people approach dialogues, I find currently the Hindi films very, very traditional. What I call traditional. I'm not saying good or bad. Yeah. Traditional. Yeah. वो classic तरीका होता है where the camera is between the audience and the story and the actors. I don't want to have these boundaries. I want the audience to feel the moment along with the characters. So this is it's a very different way of approaching storytelling. So continuing that, is it applicable for South Indian movies also? Your approach? South Indian cinema, a lot of people ask me about South Indian cinema. I feel South Indian cinema it's like a giant whale. It can't get bigger. They keep getting bigger and bigger and bigger. So, after a point, you have to invest more in complex human stories. You have to. There is that one actor from South, who did Malik, that old guy? No. He did a film called Malik. Kerala Malayalam actor. He does very interesting films. Who was in Super Deluxe also. Okay. Like Super Deluxe is a very interesting film. इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. जितनी भी साउथ की मूवीज आई, आप कोई भी देख लो, RRR देख लो, और उससे पहले आई थी KGF देख लो, तो वो बहुत दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है. तो आपको लगता है कहीं ना कहीं बॉलीवुड को अपनी जो स्क्रिप्ट है, जो स्टोरी है, वो चेंज करने की ज़रूरत है? स्टीरियोटाइप. जी हाँ, बिल्कुल. आई थिंक बॉलीवुड इज फार बिहाइंड साउथ इंडियन सिनेमा, एंड आई थिंक कि so what is RRR and KGF and Pushpa done? They have taken classic stories and told them fantastically. अब बॉलीवुड क्या करते हैं? They take classic stories and they tell them badly. क्योंकि उसमें मुझे कुछ मारने तो नहीं आएगा. No, you should be frank. हाँ, वो बॉलीवुड में ना, and I understand why also, because Bollywood has become such a machinery कि प्रोड्यूसर बोलेगा इसका गाना डालना है, उसका डांस डालना है, तो ये करना है, ये डैंड है, स्टीरियोटाइप कि अरे वो जो भी है आइटम सॉन्ग चाहिए, वो चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो होना, ऐसा करते हैं, कॉमेडी डाल दो, ये डाल दो. बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज Bollywood is a much bigger industry than South industry. Arunitra, my question is Oritra. Okay, sorry. Arunitra, my question for you is कि इस कैरेक्टर में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कितना टाइम लगा, कितना डिफिकल्टी आपने फेस किया, आपको लगा कि दिस इज द वे आई एम? A bit of both. Actually, the character is a dancer. तो मैंने अपनी जो परफॉर्मेंस लाइफ स्टार्ट की थी वो एज अ डांसर ही की थी. सो आई एम ट्रेन्ड इन बैले, जैज, कंटेम्प्रेरी. सो तो वो पार्ट बहुत इजी था. लेकिन इस कैरेक्टर की हिस्ट्री ये है कि शी कम्स फ्रॉम इंग्लैंड. सो जब वो मेरे ख्याल से
9-10 साल की थी तो ये लोग उसके पेरेंट्स सेटल हो गए थे इंग्लैंड में, तो दैट बिट वाज थोड़ा सा आई हैड टू वर्क ऑन दैट बिकॉज ऑब्वियसली द बैक स्टोरी इज डिफरेंट. Yeah, so a bit of both, but we did a lot of talk and workshop. हमने बहुत से workshops किए थे. किरण और मैंने भी बहुत सारी workshops की थी. तो या धीरे-धीरे There was one very interesting thing about Oritra about the film. I came in pink and I said. Yeah. So क्या हो रहा था? When I used to meet actresses and I would ask them कि can you dance? It's a dancer's role. So everybody can dance. मैंने कहा अरे क्या हो गया? तो सबको बोलो एंड एवरीबडी कैन डांस. आई मीन इन माय टाइम्स दे वर डांसिंग एक्टर्स एंड नॉन डांसिंग एक्टर्स. लाइक आई वाज अ नॉन डांसिंग एक्टर. मतलब मेरे से डांस नहीं होगा तो मैं बोलता था भाई मैं नहीं करूँगा ये. बट इन नाउ टाइम्स मॉडर्न टाइम्स आप बोल रहे हैं एवरीबडी डांसेस. सबके रील्स में मतलब बाप रे सब कुछ. सो आई आस्क्ड हर यू डांस. शी सेड समटाइम्स. तो मैंने कहा समटाइम्स मतलब नो नॉट सो मच. तो शी वाज बीइंग वेरी शी वाज बीइंग वेरी हम्बल अबाउट इट. When she meant not so much means she dances only 2 hours a day, not 8 hours a day. So then I said, अच्छा, what dance do you do? मुझे किसी ने बोला कि डांस भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. I didn't know that. I'm a little, you know. She said I do jazz ballet. Contemporary modern. Contemporary I modern. think the list went on and he said ये सब क्या होता है? And then at some point I told her कि आप choreograph कर लेना. And you know, and we were preparing for the character. We were doing so many other things and somehow she couldn't do much rehearsals. And me and the DOP were very concerned कि चलो आप डांस करोगे बट क्या करोगे डांस? You know, we have to understand what to do. And I asked her, I said, you know, we're shooting in 3 days, you haven't met the choreographer. And so she told me, I told you now I'll dance. Don't worry, I'm sorted. And then she sent me her videos. And I saw what she does. And I said, oh my God. And we didn't do any rehearsals during her dance, before the dance. She just came. The whole set was her platform, and I think she just took off. And the first time she took off, me and the DP were like, how do we shoot this also? You know, and we didn't have the rigs, everything, and it was quite beautiful. If you see the trailer, you know, you will see her, you know, she moves like the wind. नैना आपसे जानना चाहूँगी कि इस फिल्म में आपका रोल क्या है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्क्रिप्ट को लेकर? तो मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है अलीशा और वो इंदौर की रहने वाली है और मैं भी इंदौर की रहने वाली हूँ. तो जब मुझे नरेट किया हिमांशु ने और उन्होंने बताया मुझे कि द कैरेक्टर इज फ्रॉम इंदौर एंड आई टोल्ड हिम दैट आई एम आल्सो फ्रॉम इंदौर. So he was very excited about it that okay, finally I got my character. So yeah, she's a very confused, very sweet girl, very just living her life and experiencing life and relationships and love. Yeah. Himanshu, I hope you remember me, the first interview Yes. taken by me. Yes, I remember. Congratulations. Yes. And we are hoping कि 20th को ये master blaster हो. But first thing I wanna ask कि अब लोग आपको तुम एक्टर अगर बुलाते हैं, that you know एक जील क्रिएट करता है या फिर आपको अगर कोई बोले चित्रकूट के डायरेक्टर तो आप क्या प्रेफर करेंगे? Actually, तुम तो मेरा अस्तित्व बन चुका है. It's become my identity now. You know. And it's a very fascinating film which has created such an impact for all the actors and just the film it is, you know. That will always be. So I would like to be called Tummin actor turned director. And if you notice, even Tummin was a relationship and even Chitrakut is a relationship film, you know. And how was the experience of yours to work in the movie and हिमांशु सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था जैसा चाहते कैरेक्टर के थे. बारे में भी थोड़ा सा बताइए. तो ये एक स्केच आर्टिस्ट है जो पैसे कमाने के लिए कुकिंग करता है. मतलब उसका शौक भी है लेकिन वो एक जूनियर शेफ की तरह जॉब करता है एक रेस्टोरेंट में. बॉम्बे बॉय. मैं नहीं हूँ मुंबई से, बट जब मैंने शूट किया तब तक मैं 7-8 साल मुंबई में रह चुका. तो वो इतना टफ पार्ट नहीं था. फिर उसके लाइफ में बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं. ये तीनों लोग आते हैं और 1-2 लोग और भी आते हैं फिल्म में. तो वो कैसे कैसे चेंज होता है, कैसे कैसे इवॉल्व होता है, वो मेरे पर्सपेक्टिव से वो कहानी थी. तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट था. मतलब पहली फिल्म थी तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मज़ा आ गया कि यार ये काम मिल गया, इससे अच्छा क्या मिल सकता है. So Himanshu, one thing, left side आपने बता दिया कि who are sitting there, we know the stars, we also know the right side. So
Akbar Arabiyan. He produced Khwahish. That time I was an actor with Malika, and I remember we were a low budget film then, so I was staying with him in his house, and I was I'm still a disciplined person, so I know I was never late, always on time, wake up early, and he used to also wake up at 5 in the morning. So we had a good bond. We used to all both wake up at 4:30 in the morning, get ready, and go for shoot. Khwahish was also a very intense shoot. Then I became a filmmaker, and then I kept showing him my short films and everything. And then finally, when I wrote this script, I went to him and I said, I want you to help me some locations in Pune. So he said, what is the film about? I said, no, don't worry about that. Just get me the locations. Because मैं कैसे आपको film बताऊँ? It's a very complex film. It's a very modern film, and actually very difficult to explain the film. And I find as a filmmaker also, if you ask me what is my film about, it's very difficult to tell you in a very concise manner. So then I said ki there is one song that I wrote this whole film to. Okay, every morning I used to listen to the song and I used to write the film, and I don't even know what language the song is in. I will play that song for you, and if I can make the film like this, we'll be successful. And he heard the song, and midway through the song he said, I love the song, I love what you're doing. Whatever it is, we'll do it. We'll do it together. And he used the song a lot during many sequences. That Gone song was too good. Yes. That's the way Himanshu attracts his cast and crew. Yeah. He tells you that this is how I want the character to be. The same thing happened with me as well. Yeah. He played the song and I'm like, this is exactly how I perceive him as well. And he played, I remember it was a Spanish song and I was tripping anyway over the Spanish culture and all that, and I was like, yes, we're on the... Yeah, he's very good with picking music. तो ये ना अपने 4-5 No, I म्यूजिक really में love ऑलरेडी the song. सोच रखा था कि क्या पिक करेंगे, क्या किस पे प्ले करेंगे. so I had a song for every character. Yeah, a theme. Theme. So she didn't know what I was sending her, and they didn't know. I would say, this is your theme. मुझे लगा सबको एक ही भेजा. Now I ask you for recommendations. No, I must tell you about that Goan song. It's called Aikhan Mozatao. Okay. And so he said, I love this song, we'll do it. We started the film. Then during post-production, he said, you're putting that song in the film, na? So I said, we uske rights लेने पड़ेंगे. I didn't even know what language it was. मुझे किसी ने भेजा था, अच्छा लगा, हाँ सुन के सब कर दिया. He said, put it in the film. So then I think my assistant said, sir, this is a Goan song sung by a very famous Goanese artist called Lorna Cordero. She's like the Lata Mangeshkar of Goa. She's epic there. And Goan song. So rights, we have no idea who had the rights. We had no idea who made the album. Then I went to Goa. I spent 1 week in Goa, going village to village, finding out कि वो गाना Lorna का आपके पास है, वो who's the producer. And I got very lucky that I found one old man saying, I'm the producer. That song is with me. Oh my God. So I said, so he said I said, sir, I'm looking for you for 2 weeks. He said, now so I have to give you the song. So, no, but then he also said one thing. He said, a lot of people spoil Goa in their films. If I like how you have shot Goa, and if it is worth Lorna, because Lorna is our goddess, then I'll give you the song, otherwise no. So I said, I showed him how I shot Goa, and we had done a beautiful shoot there, and he said, no, you have captured Goa very well. And he gave me the song, and now it's in the film. It's a lovely song. So now you became a director. So do you like more acting or only direction?